Wait, good time. Wait, now recording start. Now you can ଆପଣ 1 hour ପରେ ତାକୁ ସେଇ ନାଲି ଯୋଉ ଅଛି ରିସିଭର ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଷ୍ଟପ୍ ରାଇଟିଂ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟପ୍ recording କରିବେ ଆମେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ अच्छा ठीक अछि। अच्छा मु आउ थरे दोहरेबाकू चाहूची जे तमे समस्ते स्टडी मटेरियल पाई ना हो केते जण पाइछ? How many of you have received the study material prescribed for you dispatched by IGNOU for this paper, Constitutional Government and Democracy in India, BPSC-102? Only two are raising hands. Only two. Only two. Anisha Das. ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ପାଇ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ବରିଷ୍ଠା ପାଇଛି ଅନିଶା ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆମ କାଉନସେଲିଂ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯେମିତି କଲେଜରେ କ୍ଲାସ ନଉ 45 ମିନିଟ୍ସ। ଅନିଶା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହି ମୁଁ ବି ପାଇନି। ପାଇନ? ନାଇଁ ସାର୍ ବହି ପାଇନି। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଜାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଲର୍ନର ମତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଥିଲା। ପାଇଛ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛ? ତାକୁ ମୁଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲି ଯେ ତମେ ଯାଇକି ହଁ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ନା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରେରଣା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟୁଟ କର। ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଧାନ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲି। ହଁ ମୁଁ ସେ ପିଲା କଥା କହୁଛି से बहुत व्यस्त हो पड़ा जे बही पाई पार नथिला कौन करी सर कोडी जीवी कौन करी मु ताको एडवाइस कली केते गुडे फोन नंबर देली एवं डॉक्टर मल्लिक को सहित तार इंटरेक्शन करे दिली तापर से कौन कला सी पर्सनली विजिटेड द रीजनल सेंटर एट भुवनेश्वर एंड सॉर्टेड आउट हर प्रॉब्लम तेणु तमे जो माने भुवनेश्वर रे रहुच तुमे भुवनेश्वर रीजनल सेंटर को जाई से प्रॉब्लम टी को सॉल्व करि परिबो नहेले केते गुडे कांटेक्ट नंबर तुमको दिया है जो माने दोज हु आर स्टेइंग आउटसाइड भुवनेश्वर दे कैन कांटेक्ट एम आई राइट रंजीत बाबू आगे they can contact with the regional center Bhubaneswar to sort out their problems. Abhini bhai, 1 minute, I want to speak something. Those learners who have not received their study materials, they should go through that is their website, IGNOU website, headquarter website, that is www.ignou.ac.in. So that there are some menu in which they will click and they will write some grievances and they will give their enrollment number and they have not received their study material. After some days they will receive their study material and they should go through in every aspect they should go through website. As it is a distant learner, so there is no any formal system, so we are interacting with our email and website and there is a section which is known as study material section and they should contact and they will send the study material in their home address. So in all aspects they should write or they should email to the headquarter and all these available in your IGNOU website www.ignou.ac.in. Okay, now we are just leave the let me start my class. Okay sir, we are just before the beginning of my start before the beginning of my class I would like to tell everybody that you might have political science as a subject in +2 level. Am I right? Yes sir. Yes.
then you might have gone through the Constitution of India, right? You might have gone through the Constitution of India, which is, the Constitution of India contains the basic rules prescribed by the Constituent Assembly to run the government, right? संविधान कौन संविधान रे आम शासन किभଳି परिचालित हेबो एक गणतांत्रिक राष्ट्रर से संपर्क रे वर्णना कराय एवं +2 क्लास रे तुमे समस्ते ए विषय पढिथिबो एवं जानिथिबो अच्छा can you tell me the exact date on which the Constitution of India was adopted? Can you tell me? How many of you? Can you tell me? Just a minute. Yes. January 1949. Pardon? 26 January 1949. Anybody else? Sir, actually it was introduced in 26 November 1949. Repeat once again. Hello. 26 November 1949. Right. The Constitution was adopted on your name, please. The Constitution was Jagadish adopted Prasad. on 26 November 1949. And you might be knowing that the framers of the Constitution, I mean the Constituent Assembly, took 2 years, 11 months, and 17 days to prepare the Constitution. And everybody knows that the Constitution came into force on 26 January 1950. 26 नवेम्बर 1949 दिन आम संविधान प्रस्तुत हो गला तापरे आम संविधान जनवरी 26 1950 दिन कार्यकारी हला ए आम संविधान रे आमे अनेक गुड़िए संविधान रु अनेक गुड़िए विषय जानिबा को पाइबा मु कहिछि जे कॉलेज रो जनरल क्लास भली ए क्लास हुए नाही इग्नोर स्टडी मटेरियल पाइसला परे लंडन माने पढ़िबे ताकू जोडी बुझी न पारिबे सेठी से माने तांकर संदेह को बा डाउट को क्लैरिफाई करिवे संदेह मोचन करिवे काउंसलर सहित आई एम नॉट द टीचर हियर आई एम द काउंसलर राइट तेणु जेहेतु तुम समस्ते पाई नाह कौन ऑलमोस्ट ऑल बही पाई नाह तेणु बही हाँ अनिशा दास कौन प्रॉब्लम है नहीं सर जस्ट एमती राइजिंग हैंड ता मार देली अच्छी बोली क्लास रे अच्छा ओके सेटा को आउ थरे क्लिक कले सेटा डिलीट हे जिवो आज्ञा सर रेखामणि प्रधान एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन No, do sir. you hear me Yes, sir. Rekhamani Pradhan, do you hear me? Yes, sir. Any question? No, sir. You have raised your hand. Yes, sir. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁ ନଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ 26 ନଭେମ୍ବର 1947 ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ରାଇଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରିଥିଲି ତ अच्छा ठीक है संदीप प्रधान and कालूचरण जेना any question? Okay, Kalucharan Sandeep Pradhan. Yes sir. Any question? No sir. You have raised your hand.
No, sir. At the time you have asked the question, at that time I have raised that. Okay, no problem. Yes, You don't have any problem with me regarding so far as the teaching is concerned, right? yes, ମୁଁ ଏ କଥା yes, sir. କହୁଥିଲି ଯେ the framers of the constitution was known as the Constituent Assembly, which prepared the constitution for India, and they consumed 2 years, 11 months, and 17 days to prepare the constitution. And the constitution came into force on 26 January 1950. Let us go through the history of the preparation of the constitution. You know, the Constitution of India includes the provisions providing basic democratic rights of human beings, you know, including the persons who are not Indian citizens. You might be knowing that in part 3 of the Indian Constitution, for that reason, fundamental rights have been incorporated. ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି to ensure rights of the people. It also embodies provisions for availability of institutions for legislation, execution, and jurisdiction for the fulfillment of these rights. You know, the fundamental rights are guaranteed, and the fundamental rights are enforceable. The fundamental rights are judiciable. मौलिक अधिकार आमर जदि क्षुण्ण हुए आमे सीधा सड़क राज्य उच्च न्यायालय किंबा देशर सर्वोच्च न्यायालय द्वारस्थ हो परिबा in order to enforce our fundamental rights. एमती अनेक प्रसंग अच्छी. The Constitution of India also includes the various provisions for running of the executive, legislature, as well as judiciary. आमे संविधानर प्रत्येक पृष्ठार बा आम संविधान आमे जानिछु 395 गोटी धारा अछि, 12 गोटी अनुच्छेद अछि, एवं आम संविधान होछि पृथ्वीर सर्वबृहत लिखित संविधान. तेणु प्रत्येक शासन संपर्कीय प्रत्येक अंश को आम संविधान स्पर्श करिछि. आम एणिकी जानिबा जे प्रकृतर आम संविधान तैयारी हैला केमिति. बिलात सरकार पराधीन थिबा भारत को स्वाधीनता देबा पूर्वरु गोटे आईन रो प्रचलन करिथिले. ताहा थिला भारत शासन आईन 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. And that Government of India Act 1935 is said to be the major source of Indian Constitution. भारत शासन आईन 1935 आम संविधान प्रमुख उत्स बोली विवेचना करा जाए. कारण से अनेक गुड़िए व्यवस्था थिला जहाकू परवर्ती अवस्था रे आम संविधान रे स्थान दिया है. And you know,
The Government of India Act 1858, prior to implementation of 1935 Act, it provide for a combination of centralized and decentralized power structure to govern India. Both they prescribed for in some cases centralization of power, and in some cases decentralization of power. The centralized structure was introduced in the area which were under the control of the crown. सेतेबेले शासन किए आम करुथिले ब्रिटिश सरकार, राजा व राणी, क्राउन। तेणु किछि केंद्रीय क्षमता गुड़िक तांको हातरे न्यस्त थिला। These areas were known as British India province। से जो अंचल गुड़िक जोटी सीधा सड़क इंग्रेज सरकारंकर शासन रो प्रभाव पड़ुथिला ताकू कुआ जाउथिला ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। The centralized structure was introduced in the areas which were not under the direct control of the crown. These areas were ruled by Indian princes। इस आउ किछि अंचल को भारत रे राजा माने शासन करुथिले, राजा राजुड़ा शासन थिला। The Government of India Act एगुडा सब तुम पढ़िथिबो। सुन, मो जेहेतु आज प्रथम क्लास, जेहेतु आमर आज प्रथम क्लास, तेणु से संपर्क में मु खाली टिके टिके कहूची। किंतु नॉर्मली इग्नो क्लास रे जो गोटे घंटे क्लास हुए, मु कहि सारची तुम समस्त को जे पिला माने लर्नर माने घरे पढ़िबे एवं तांको डाउट को संदेह को मोचन करिवे एठी क्लास रे। It is a counselor by myself, the teacher. He cannot scream, he cannot shout 60 minutes at a stretch. मु एठी 60 मिनिट धरी कंटिन्यूअसली चित्कार बा बड़ पार्टी क्लास नहीं पारिबी नाही। तेणु जेहेतु तुमे कही ए पर्यंत बही बा तार जो इग्नोर स्टडी मटेरियल गुडी को पाइना हो, सेठी पाई समस्या होची तमे कोन क्वेश्चन करि पारु ना। तेणु कोन को Any question? अरे समस्ते अच्छो ना नहीं छाड़ी पड़े लेनी? अच्छा हाँ को सर को तमर जो समस्या गुड़िक बा पाठ संपर्क जो जानिबा कथा मो ठार बुझीबा कथा, कारण मु कहली 60 मिनिट धरी रेगुलर कंटिन्यूअसली पढ़ेवा पई ये क्लास नुहे। भारत शासन आईन 1935 संपर्क रे जानिछ ना नहीं? नो सर, सेठी एक्सप्लेन करंतु। मु से कथा आरंभ रु कहली जे घंटाए भितरे मते अनेक गुड़िए टॉपिक टच करिवार अछि। आ मु जदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक्सप्लेन करिवि सेटा हो जिवो गोटे रेगुलर क्लास। किए क्वेश्चन कला मे नो सर राजलक्ष्मी बेरा। ठीक अछि।
मु आरंभ रु कहिछि जे कॉलेज रे जेंति पाठ पढ़ा जाए इग्नो क्लास रे सेही भली पाठ पढ़ा जाए नाही कंटिन्यूअस तमे घरे पढ़िबो जो विषय गुडी को बुझी न पारिबो सेटा को काउंसलर हियर आई एम नॉट द टीचर हाउएवर the government of India Act 1935 as I said you earlier was made by the British Parliament and that was different from the earlier government of India acts. As I have already told you, under those acts, the government in the British India provinces was unitary. तमे जानिछ भारत एक संघीय राष्ट्र किंतु can you tell me the name of the state which is a unitary state? Tell me the name of the state in India, sorry, tell me the name of the state of the world which is having unitary form of government. Can you tell me? जे पृथ्वीर एकमात्र ऐकिक देशर ना जोटी कि समस्त क्षमता केंद्र सरकार को हाथ में न्यस्त कराही सर दिल्ली दिल्लीटा हूँ भारत एक भारत रे थिबा एक अंचल नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली मु कहली जे पृथ्वीर एकमात्र देश राष्ट्र जहाँ को ऐकिक राष्ट्र मान्यता दिया जाइछि बा जहाँ को ऐकिक राष्ट्र बोली कहा जाए. हेलो सर यूके. Do you know? Yes, Sandeep. Yes sir. Which country? Anisha? Sir UK. सर इंडिया. सर चाइना. मु आरंभ रु कहिछि भारत होछि एक संघीय राष्ट्र. India is a federal state. The only country in the world which is Pradeep Dehri. Can you tell me? Can you answer? America. No. I am afraid. No. Sir, China. It is Great Britain. No, it is Great Britain. It is United Kingdom, Great Britain, England. England is the only country which is having unitary form of government. जोटी की ऐकिक राष्ट्र मान्यता मिली इंग्लैंड को समस्त क्षमता केंद्र सरकार को हाथ में न्यस्त. फेडरल स्टेट. America is a federal state, and you know China is a communist country. That China is not having democratic principles, right? गणतांत्रिक देश नुहे China. So ऐकिक थिला सेते बेले. It means that the same government operated at different vertical levels. गोटे सरकार विभिन्न स्तर रे समांतराल भावे काम करुथिला. गोटे सरकार. Unlike the earlier acts, the Government of India Act 1935 also provided for a provincial government enjoying provincial autonomy. It provided safeguards for minorities. Safeguards for minorities. Such safeguards included provisions for separate representation to Muslims, Sikhs, the Europeans, Indian Christians, and Anglo-Indians. This act also provided for 3 lists of division of powers between the federation, that means the central government, and provinces, the federating unit. Concurrent and provincial.
The act also provided for establishment of a feudal court of to adjudicate the disputes. Federal court, sorry, the federal court. से 1935 मसीहा आईन रे भारत को संघीय राष्ट्र भावे परिचालित करिवा पाई व्यवस्था है। सेमती गोटे संघीय अदालत रहिला फेडरल कोर्ट। In state levels the highest court is high court, and if you talk of the central level, the apex court is the Honorable Supreme Court of India, the highest court of appeal. सेठी मध्य संघीय ढांचार प्रभाव पड़िला विचार व्यवस्था उपरे। It was provided in the Government of India Act 1935. Under the executive head of the provincial government was governor, who enjoyed special powers. The governor enjoyed special powers. Under the special power, the governor could veto the decisions of the provincial legislature. राज्य विधानमंडल, राज्य व्यवस्थापिका सभा जो आईन प्रणयन करे ताहा सर्वशेष स्वीकृति पाई राज्यपाल निकट को जाए। राज्यपाल ताकू स्वीकृति तत्क्षणात स्वीकृति देई पारंती, न देई पारंती, पकई रखी पारंती। न देई पारले आमे ताकू कोन कहबा, राज्यपालंकर भीटो क्षमता है। ये राज्यपाल भीटो क्षमता प्रयोग कले, स्वतंत्र क्षमता। आई वाज टॉकिंग ऑफ द स्पेशल पावर्स फ्यू मिनिट्स एगो। पकई रखी पारंती, नहेले वर्तमान व्यवस्था अनुଯାयी राष्ट्रपति स्वीकृति पाया पाई राष्ट्रपति निकट को पठे दे पारंती। That is the special power, the discretionary power enjoyed by the governor of a state nowadays in India. The governor acted on behalf of the crown, was not the subordinate of the governor general. He enjoyed discretionary powers to exercise his individual judgments in certain matters. In such matters, he did not need to work under the advice of minister. स्वतंत्र क्षमता प्रयोग कला बेले राज्यपाल मंत्री मानकर जो परामर्श ताकू न नहीं पारंती, as per the provisions of Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 also had provisions for setting up a central government consisting of the representatives from the provinces. प्रदेश गुड़ी करू, राज्य गुड़ी करू प्रतिनिधि भाव में निर्वाचित होइथिबा व्यक्ति मानन को नहीं केंद्र रे एक सरकार रहिबो, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेमिति प्रति राज्य रे राज्यर विभिन्न कोण अनुकोणरू निर्वाचित होइतिबा प्रतिनिधि मानन को नहीं एक राज्य सरकार रहिबो। एई सरकार को केंद्र रे थिबा सरकार को संघीय सरकार कुहाजिबो, फेडरल गवर्नमेंट। Because of the composition with members of both from provinces and the states, जेतु भारत विभिन्न अंचल से माने आसीबे तेणु सेहिति पाई ताकू कोन कुहाजिबो,
संघीय सरकार कुआजिबो एवं the only provincial governments could be formed as per this act. तमे जानिच जे संघीय राष्ट्रर केते गुडी लक्षण बा उपादान अछि. What are they? First, a written and rigid constitution. Second, dual government. Third, division of power. Fourth, bicameral legislature. Fifth, independent and impartial judiciary. These 5 elements consist of the consisting these 5 elements, a state can be said as a federal state or federal country. जो देश रे एई सबु लक्षण गुड़िक देखिबा को मिलिबो सेई देश को एक संघीय राष्ट्र बोली कहाजिबो. 1935 मसीहा भारत शासन आईन रे भारत को एई भली एक संघीय राष्ट्र भाबरे गढ़ी तोलिबा पाई व्यवस्था करा जायथिला एवं एई 1935 मसीहा आईन जेहेतु आमे पराधीन थिला बेले अनुमोदित होइथिला सेते बेले ब्रिटिश सरकार एहा को बा ब्रिटिश पार्लियामेंट एहा को प्रणयन करिथिला. स्वाधीनता पूर्वरु जातीय कांग्रेस नेतृत्व रे आम स्वाधीनता संग्रामी माने अनेक गुड़िए दाबी उपस्थापन करिसेंती ब्रिटिश करिथिले ब्रिटिश सरकार को सम्मुख रे जे हमर एई दाबी गुड़ी को सब पूर्ण हो. सबु दाबी को पछरे पकई एक नंबर बा प्रथम दाबी थिला जे आमको स्वाधीनता दिया जाऊ, आम देश छाड़ी आपण माने पळई जांतु, ता फଳରେ आम देश को आमे केमिति शासन करिवु सेति पई आमे गोटे संविधान प्रस्तुत करिवार सुयोग पाइबु. तेणु आमे सेते बेले एक संविधान प्रस्तुत करिवार सुयोग पाइबु. That was the first and foremost demand of the leaders of Indian National Congress. Seven said kon gole the Britishers, they know the tricks. They study the heart rate of the Indians, the pulse rate of the Indians, and they cheated from time to time by offering various proposals. They cheated from time to time. Initially, India was a colony of Great Britain. The colonial authorities raised the demand for the creation of a constitution for India. But with the change in circumstances, the outbreak of the World War II, द्वितीय विश्व युद्ध होला सेते बेले, and formation of the new coalition in Great Britain, नुआ सरकार हैला श्रमिक दल नेतृत्व रे प्रतिष्ठा हैला इंग्लैंड रे, गवर्नमेंट इन ब्रिटेन. The British government was forced to acknowledge the urgency to solve the problems related to the Constitution of India or related to the Constitution of the Indians.
In 1942, you know, 42 मसीह कौन होइतिला ऐतिहासिक घटना आम देश रे? Who can say? Quit India movement. Right, Quit India movement. Can you tell me the exact date? Can you tell me the August exact 8, date? 1942 अगस्त 8 1942 मसीहा अगस्त 8 You are partially correct. That was 9th August 1942. Right? In 1942, you may mute. In 1942, the British government sent its cabinet member, whose name was, you may note it down, since you have not yet received the study materials from below, note it down, Sir Stafford Cripps. 42 मसीह इंग्रेज सरकार कौन कला तांको मंत्रिमंडल जने कैबिनेट सभ्य सर स्टाफोर्ड क्रिप्स को पठेला कोटी भारत को पठेला कौन पाई पठेला सर स्टाफोर्ड क्रिप्स with the draft declaration on proposals Sir, your voice is breaking, sir. Yes, Anumati. Yes, sir. Your voice is breaking, sir. We can't able to. Sir, network. It happens because of network problem. Subuni, bhalo Subuni. Yes, sir. Right now, can I head it? सी सेठू पठेले क्रिप्स को तमे जाओ एई चिठाटा एई दलिलटा नै कि भारतीय नेता मान को देखेबो जे द्वितीय विश्व युद्ध सरीगला परे आमे तुमको स्वाधीनता देई दबु तमे स्वाधीन हो एवं सेते बेले बाय दैट टाइम भारत कहले आमे वर्तमान रो को देश को बुझौथिलु Can you tell me the names of the countries? Bangladesh, Pakistan, India, Yes. Yes. Nepal, Afghanistan. No. Myanmar. No. Right now, you are right. भारत बांग्लादेश पाकिस्तान को नहीं कि भारत थिला The Britishers, you know, they planted a seed of segregation in the name of religion. Right? धर्म नारे से आम भितर गोटे मंजी पोती देले जे भाग भाग होइजिवे माने किए हिंदू आउ मुसलमान भारतीय जातीय कांग्रेस सेना भारतर स्वाधीनता पाई खूब फुल दम रे लड़ुथिला ता सहित मुसलमान मानक द्वारा गठित होइथिबा मुस्लिम लीग जार नेता किए थिले कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग Muhammad Ali Jinnah. Right, Muhammad Ali Jinnah was the leader of Muslim. Right. सी कौन कले जे यांकु आनी की देखेले एवं एमाने सबू तांको कथारे राजी हे गले क्रिप्स मिशन ताकू को जाउथला क्रिप्स मिशन जे आमे द्वितीय विश्व युद्ध सरीगला परे तुमको स्वाधीनता दबु
संविधान तैयारी करिया पई यही सबू चिठा आमे तैयारी करिछु स्वाधीनता हासिल कला परे तमे तमरो संविधान करिवो उभय हिंदू और मुसलमान कौन चैट बॉक्स रे आसिला गोटे क्वेश्चन उभय हिंदू और मुसलमान ए प्रस्ताव रे राजी हे गले मो गोटे कथा स्पष्ट करिया को चाहे सिंस दिस इज द फर्स्ट क्लास मो आरंभ रु कहिची जे आई कैन नॉट टीच 60 मिनिट्स एट ए स्ट्रेच राइट you during this period you may try to have your study materials from IGNOU regional center Bhubaneswar and go through the books go through the study materials and clarify your doubts in this counseling class. I am the counselor here एवं मु कहिछि बारंबार एई मु आजि जेमती आट स्ट्रेच किछि दीर्घ समय धरी तमरो क्लास नेली बा पढ़ेली से भली दीर्घ समय धरी वर्तमान जने जॉइन करछि दीर्घ समय धरी मु तुम सहित इंटरैक्शन करि परिबि नाही माने चैप्टर वाइज चैप्टर जेमती हमरो जनरल कॉलेज रे क्लास रे पढ़ाबे सेमती पढ़े होबो नाही तमे तुम डाउट क्लियर करा के प्रश्न करिवो सेति भाई जते समय लागिवो मु कहि आज आमे जति की आज प्रथम क्लास रे आमे जति की श्री गणेश कले तमे जति की जानिलो मते खाली एति की कह तमे समस्त ओडिया पिला ना बाहर पिला के अछंती any non-Odia can raise Rakesh Kumar Khotua. Are you non-Odia? No, sir. प्राय समस्त ओडिया अछंती मज्जा लागुची समस्या होची जेतु तमे परीक्षा दबो इंग्लिश रे I must teach in English and if you don't follow me for some reasons if you fail to chase me or do not understand my teaching you are free to raise your hands you may ask as many times as you like as many times as you like and I am here to clarify your doubts all sorts of doubts अच्छा आमे जिबा पूर्वरु मैं once again request to all of you to come to the video mode to take another shot another screenshot बहुत पिला थिले मु देखुची only 24 जॉइन करचंती समस्ते आसु नाहंदी दैट इज द प्रॉब्लम मते इग्नो को देखिया को पड़िबो जे एति की पिला ही मोर फर्स्ट क्लास रे प्रेजेंट थिले एवं एति की पिलांकर मो क्लास नै छी एति की पिला उपस्थित थिले एटलीस्ट स्क्रीन टा फुल होबा दरकार मो स्क्रीन टा मो लैपटॉप स्क्रीन टा फुल होबा दरकार सुनांदी ओनली राकेश प्रदीप मात्र 2 जन अछंती वीडियो मोड रे माई सेल्फ आ स्क्रीन ने मु देखुची भानुमती रेखामणि कालुचरण संदीप प्रधान नव उजाला कौन संदीप प्रधान गोलमाल कलो संदीप प्रधान is presenting what is the problem sorry sir you disturb the entire class no sir right तमे केवल ऑडियो वीडियो रे ही हाथ मारिबो जो दीटा अछि अन्य कोडी हाथ मारले द एंटायर क्लास विल बी
problematic, the entire class will be disturbed. Right? Any question from your side? तमे एपर्यंत भी फुल स्क्रीन के वीडियो मोड रे आसिलनी, दैट इज द प्रॉब्लम. मो कथा तमे बुझी पारछो कि नहीं मो बुझी पारनी, किंतु हाँ आसिलो मु गोटे फोटो तमरो नेबी बोली फोटो तो तमे केते सेल्फी केते कोन उठाउछो से छाड़ो, एथिरे छोट छोट खाली मुओ टिके टिके डाक स्टाम्प पोस्ट ऑफिस रो स्टाम्प बळी जो आसीबो. आउ जने आसिलानी संदीप प्रधान जे डिस्टर्ब कला मोरू हाथ काड़े सर नेटवर्क प्रॉब्लम टिके पुणी कुआडे पळे गलो सब. अरे किए मोरे हाथ दउची के once again once again Sorry. Today's class is over. हमें as per the time schedule supplied to you as well as to me, next class से अनुसार अब next class को दिन अछि काली अछि की Yes, sir. मो से अनुसार आसीबे. Okay. हेलो सर. You may leave now. हेलो सर, आई हैव अ डाउट. Yes, yes, yes. Sir, as you earlier said that Indian Constitution is the largest written constitution in the world. So, sir, my question is, what is the difference टिके between a टिके written? टिके voice टिके टिके कम सुबुची टिके अधिक. हाँ Okay, sir. Okay. बड़ पाटरे को. Sir, as you have said that Indian Constitution is the largest written constitution in the world. Right. So, sir, I have a doubt that what is the difference between a written and unwritten constitution? It is very clear. If something is written, that is the Indian Constitution is written. तमे जो जिनसटा को लेखिलो सेटा हला लिपिबद्ध लिखित संविधान. आ जो जो संविधान आदौ लेखा हैनी. Sir, but UK अलिखित has unwritten. Yes, Great Britain has no constitution, no written constitution like India. You know, India is having a written constitution, and that is not the simple answer. Indian constitution is the largest written constitution of the world. Yes, sir. But in Great Britain, there is no written constitution. तांको संविधान लेखा है नहीं, तांको पार्लियामेंट जहाँ निष्पत्ति नहीं से अनुसार ही आईन कार्यकारी हुए. बुझेला? Okay, sir. Yes, sir. See you in the next class. Okay? Okay, sir. Do you hear me? Anyone hear me? Please tell.